Now similar is question number 5. You have to just write the general formula. You have to write the pattern. How many line segments are there? 1, 2, 3, 4. So write here 4. Second place, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third place, how many? 4, 8, 12. So and so on. What general formula you will write for this? You will just, it is just a 4 table. So simply you can write here 4n. Directly whenever there is table, directly you can write that table 4n. Okay, so this is the general, this is the answer. But when it is not table, suppose it will not be a direct table. See, here are how many line segments? 6. How many here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are 11. So in third figure, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. You have to count again. These were 11, 12, 13, 14, 15, 16. So there are 16. So now what general formula you can write for this? This is same as this question. See, 6, 11. Similarly 6, same shape. Okay. So I am going to tell you how to write the general formula when table is there, directly there is 4 tables, so you can directly write the formula 4n. If there will be 5 table, then you can write 5n. So first of all you have to write the pattern. Understood? Write the pattern, then you can understand easily that which table is that, so you can directly write the formula 4n. Now this is not table, there is same common difference between them. So write the pattern here first. 6, 11, 16. Okay, what is A here? A means first term. What is first term here? It is 6. And what is difference? D means difference. What is difference? Common difference. 11 minus 6 5 होता है. Again 16 minus 11 5, same ही आएगा ना. So difference is 5. Now general formula. General formula you have to write. They are saying that write general formula, so you know very well this is the general formula. A plus n minus 1 into d. इस क्वेश्चन में आप a और d की वैल्यू फिल कर दो, यू विल गेट द आंसर. ओके, a की वैल्यू फिल करो. a की वैल्यू क्या है? 6 प्लस n हमें पता नहीं, बिकॉज हमने कोई प्लेस थोड़ी फाइंड करनी कि अगली प्लेस में क्या आएगा. अगर पूछेंगे तो आप ये कौन सी प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस है, तो आप n4 पुट कर सकते हो. लेकिन इन्होंने अगली प्लेस नहीं पूछा. दे हैव जस्ट आस्क्ड द जनरल फार्मूला, सो यू कैन राइट दिस एंड पुट द वैल्यू ऑफ a. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d. ये d मल्टीप्लाई में इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ. सो d इज़ 5. नाउ यू कैन सॉल्व इट. सी हाउ टू सॉल्व इट. 6 वैसे प्लस वैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. n को 5 के साथ, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आता ना आपको, सो यू विल गेट 5n. और ये 1 को फिर अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. यू विल गेट माइनस है बीच में, -5. ओके, इसको भी इसके साथ एंड इसको भी, n को भी एंड 1 को भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ. तो ये दोनों क्या हैं? नंबर्स हैं. सो यू कैन, देयर फ्रेंड्स, इट मीन्स यू कैन सब्ट्रैक्ट दैम. 6 माइनस 5 कितना होता है? 1. तो ये वैसा का वैसा, ये अलग था ना, बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल. n वेरिएबल आ गया ना इसमें. तो ये आपका क्या आ गया? जनरल फार्मूला. अंडरस्टूड? So have you got how to write the general formula for the given pattern? First of all you have to write pattern, then first term, then difference, then learn this formula and solve it by putting the value of a and d. Thank you.